Netflix पर आप देख सकते हैं the new film Gunjan Saxena The Kargil Girl. Now, this is based on the real-life story of Gunjan Saxena, who was the first Indian Air Force female officer to fly in the combat zone in 1999 Kargil. She was also the first woman to receive the Shaurya Veer Award. यानी कि अपने आप में ये कहानी दमदार, full of inspiration and bravery. The challenge was always going to be कि इसकी cinematic retelling किस तरीके की होगी, क्योंकि हमारी एक बुरी आदत है ना, हर चीज ओवर ड्रामेटाइज कर देंगे भारी भरकम डायलॉग और लाउड बैकग्राउंड के साथ। आपको सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है that गुंजन सक्सेना टेक्स फ्लाइट स्मूथली और किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति को अच्छी तरह से अवॉइड किया गया है। The film has been directed by शरण शर्मा, first time director है, who has written and adorned this real life story along with निखिल मेहरोत्रा. Little Gunjan, or Gunju, as she's प्यार से called by her family, is enamored by planes and flying. Triumphantly जाके अपने भाई को वो बताती है कि बड़े होके उसने पायलट बनना है। सुनते ही भाई उसका मजाक उड़ाता है, तू तो बस बोल सर आप नॉनवेज लेंगे या वेज, क्योंकि लड़कियां एयर हॉस्टेसेस बनती हैं, पायलट थोड़ी ना। ये सुनते ही the protective father walks in and he explains कि प्लेन को लड़का चलाए या लड़की, बुलाते तो पायलट ही हैं। So it's settled. At least ये dinner table conversation के बाद तो Gunjan can be whoever she wants to be. But real world comes with its own set of challenges. Janhvi Kapoor है in the role of Gunjan Saxena, who simply by daring to work towards her dream is creating history. और जानवी अपने इस किरदार को with a lot of sincerity and honesty निभाती हैं. The real Gunjan Saxena was some 24 years old at the time of Kargil. यहाँ पे जानवी looks very young, starry-eyed, and yet that silent resolve to forge ahead in spite of all the discrimination that she faces, that is fascinating. There are some very practical issues, like no toilets or changing rooms separate for women. To the deep-seated institutional bias that she has to go through that makes all of us aware कि इन female officers को क्या-क्या deal करना पड़ा था to just want to be able to do what they want to do. अब चाहे फिल्म का central character गुंजन है, but the most important cinematic bits they involve the family. अब फिल्म में अगर पंकज त्रिपाठी हो, आप कैसे इग्नोर कर सकते हो उन्हें? Who is absolutely fabulous as this warm, wise, always encouraging father. Some of the most impactful lines are almost whispered by Tripathi, उनके typical trademark style में, and they reverberate with their importance. Less is always more in his case. और ये जो father-daughter moments हैं, they will make you very emotional and teary-eyed. पहले ही बता रही हूँ. इस डेफ्ट स्टोरी टेलिंग को असिस्ट किया है सपोर्टिंग कास्ट ने. आप किसी को ले लो, they've impressed us. अंगद बेदी in the role of an overprotective elder brother जो गुंजन को हर चीज के लिए मना करते रहते हैं, या फिर फ्लाइट कमांडर विनीत कुमार सिंह who resists her inclusion in the unit, या मानव विज the commanding officer who's fierce and fair and he's just impeccable in his role. And not to forget Aisha Raza Mishra in the role of Gunjan's on-screen mother. She's so good as this always hyper worried mother. या Manish Verma, the officer who recruits her. He's also so good. जो actual battle sequences है ना, they aren't too many, but somewhere they have been shot very amateurishly. वो देखने में उतना मजा नहीं आता. But the film genuinely shines in the emotional sequences. एकदम restraint के साथ कहानी बताई गई है, which is why when it ends full feel के साथ there is a song भारत की बेटी, credit देना चाहिए, गाया है अरिजीत सिंह ने, compose किया अमित त्रिवेदी और लिखा है कौसर मुनीर ने. तो बड़ा मजा आता है उसे सुनने में and it complements the overall mood. This is a film which has been told with such restraint it seals a place in our hearts. इसलिए दे रही हूँ पूरे 4 Quints out of 5. रिव्यू का क्रेडिट मुझे जाता है, which is why I'm telling you कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्विंट को सब्सक्राइब करें और अच्छे वाले कमेंट्स कमेंट सेक्शन पे लिख दें. ऑल्सो आई हैव अ न्यू एड्रेस ऑन फेसबुक, स्तुति ऑन द क्विंट पेज का नाम है, उसे जरूर लाइक करिएगा फॉर मोर कॉन्वर्सेशंस अराउंड फिल्म्स एंड व्हाट शोज टू वॉच एंड एवरीथिंग.